Assalamu alaikum everyone. Hello there. My name is Alireza Khan and I welcome you in another exciting episode of The AK Show. Ladies and gentlemen, today we have with us a very special guest. She clearly does not need any introduction at all. She is one of the most versatile women, one of the most versatile personality I've ever seen. She's definitely the pride of her country. Ladies and gentlemen, with your round of applause, let me welcome the guest for today, the amazing, the exceptional Miss Asma Tariq. Thank you very much, ma'am, for joining. Thank you. It's also honor for me to be here, and I'm very happy to join you. You are really doing great job, and I actually I really like when I saw your work, and then at that time I really wanted to come to your show because I was thinking this boy is doing something different and something good and which need to be admired. Thank you very much. Means a lot for me. Usually the concept of my show is different. I prepare things before the live, but this time I wanted this to be different. I wanted this show to be very spontaneous, natural. So I want you to be spontaneous. I want you to put your heart outside to the world. I've seen your work, of course. I've seen your interviews. You were invited to some national TV programs, and I've listened to all of that. Um, tell me about your life journey, about your journey on social media. Um, Make it a bit precise but brief. I would really love to know what inspired you, what made you end up being on social media. So take us through your journey on social media. Over to you. Yeah, sure. If I like social media for me is a platform like which changed a lot of things in my life, and that's actually happened. Like it's not like that I'm doing writing and I'm author, but this is not like thing I joined recently. I'm writing since I was in second class and first class because I started reading very early in my life from 4 or 5 years old, since I'm doing reading. So since that, I'm very excited to write. I always writing. I have a lot of diaries, a lot of they are still there, a lot of notes. And I was just really wanted to publish them. I really wanted to be publish them in the newspaper in the sites. But at that time, it was impossible for me to do that because at first we live in the village, so it was that life was totally different. Then we came in a city. At that time, I was in I think fourth class or I in my third grade. So that life was also different. That was fun. Like in village, we were fun. We were like the princess, and everything was like. But when we came city, here the thing was totally different. Like people were so their conversations, their walk, their talk, everything so updated, so modified, and they made fun of you. And I was like, it was like you can't exist in them. But with the passage of time, I learned how to evolve. I learned how to talk with them, and that happens. That things are like happening on and on. I keep writing, but it was secretly writing, like it was in one of my diaries. But with the passage of time, then a revolution happened. I got a mobile. That was my for me. That was a revolutionary period. Before mobile, I was like before mobile and laptop. It was like I had the books were for me. Books were just the magics. And then at ninth class, I think at ninth class, I got the phone. It was a Nokia. Even it was a Nokia, the one with the buttons, and then one a laptop. But there was no internet. So I actually do it like I make the mobile charts, and I even use the internet with this button mobile. I keep downloading the books, keep downloading the files, and they didn't open in the
phone suddenly, it was just like a, but I then like convert them into the laptop and I open these files on the laptop. And this was like a fun, like the new word and new things are just going to be happen. Then I made profile on the Facebook, that was also secretly happen. And I did that just to search the things, just to connect with the people. Like I whenever I write whenever I like read some book, I always connect with the author. I think this everybody wants to, and everybody wants to. So I really want. So I searched on the authors and wrote them the letters. I try to connect with them. Similarly, with the passage of time, I try to upload my own work there. And with the passage of time, it doesn't happen. I gain appreciation from some people. And then one day, a lady from UK, she just connected me and she said, I really like your work. I also, like, I invited you to do work for me. I want to write a book, but I wanted that you can write for me. So that happens. I wrote a book for her, and then second book, and then the things are going to be happen. Like then I published my articles in some national and international level magazines and newspapers, and I also got the emails. One thing, online. Honestly, I just search out the things, I search out the magazines, and I send them my scripts, I send them my work, and if they like them, certainly they publish them. So this is how my social media life happens. It's yet going on, but the thing is that for me, it's like it's a different world. It connects me with the people, with the things with whom I really wanted to connect. And even if I can't go there, like if I'm at that place where the people are not existing, I still can connect with this social media. So for me, it's revolutionary. Yeah, people said it's not good. It has a lot of the disadvantages. A lot of things are still there. But I said, human, you are human. Your mind is more stronger than any other thing. And if there is something artificial intelligence, just think for a while. This artificial intelligence is also made by a human. It's also like going on through by the human, so we can control the things. Even I have a 11-year-old sister. She has her own Facebook profile, and she is also made an Instagram. Like sometimes she don't want to publish something there, and I force her to make a video, do something, and like update your profiles, but with your work, with your like positive things that you do. Wow, that was a wonderful elaboration. Thank you very much, ma'am. And I don't know, but you realize this or not, but you are such an inspiration to thousands of Pakistani women who are struggling to open their wings and fly, and who are struggling to, achieve their dreams, achieve their goals. So you are definitely a symbol of empowerment, a symbol of inspiration. Thank you so much. And I agree with you. You're not only just skilled, because talent तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. The thing is कि जिस मुल्क में टैलेंट की, किसी भी मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वैल्यूज मैटर करती हैं, लोगों के बिहेवियर मैटर करते हैं. तो आप में दोनों चीजें हैं. स्किल्स तो डेफिनेटली हैं, बट योर आई कैन सी योर वर्क, यू डेफिनेटली हैव वैल्यूज, एंड your body of work is just so commendable. So I want to ask you, because I'm sure because you are a woman, of course you are a girl, क्योंकि मैं एक बॉय हूँ, मेरा जेंडर एक क्योंकि आपको पता है हमारी हायरार्कीज हैं, माशरा किस तरह का है, पेट्रियार्की है हमारे पास. तो मैं एक मर्द होकर भी मुझे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है. तो आई एम श्योर कि आपको तो because since you are a woman, you must have been facing a lot. I did not meant to say it in that way, but I want to ask you that what are some of the obstacles you had to face in the start of your career, and how you deal with them? I think there's been an internet issue with her. We'll be just waiting for him. So for those of you watching, I would tell you guys about her work.
She is actually a very talented, young, and exuberant girl from Pakistan whose dreams are larger than life and beyond the conventional mindsets of a common Pakistani women. She is also the youngest self help book author and additionally a phenomenal writer with articulated ideologies. She's an author at Dunya Blogs and columnist at urdupoint.com. Furthermore, Asma is utilizing her social media influence and activism to empower the youth, for which she introduced Pakistan's leadership school. She has taught thousands of Pakistani boys and girls, and currently she's serving as a secretary at Insan Party. Due to an internet issue, she was with us. She just left now because of her internet issue, and she will be back with us shortly. So we will just wait for her. So, for those of you who don't know Esma, I have no idea what you're doing with your life. Go on, check out her Facebook profile. It's given in the description. Go and just see the body of work that she's doing. And, sometimes I feel honored. Sometimes I feel super proud to see that there are such incredibly inspirational women in Pakistan who are doing this tremendous work. Okay, she's back with us. Uh, okay, I hope it's all right now. Yeah, the light issues. Gigi, it's okay. It happens to me all the time, and it's really, really terrifying. Okay, so I was telling the viewers about your work and your skills, and because there's a long list of work that you are doing, and I cannot mention all of that. आपकी जो काम की फहरिस्त है वो बहुत बड़ी है, but overall the bottom line is you are doing an absolutely fantastic job. तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता रहा था कि क्योंकि मैं एक मर्द हूँ तो मेल होकर भी मुझे सोशल मीडिया पे जब मैं आया एंड दैट टू वेरी यंग, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा एंड आई एम श्योर क्योंकि आप एक औरत हैं, आप एक women हैं and that too in a patriarchal society, so you definitely have been facing a lot of obstacles. So the question is, what were some of the major obstacles that you had to face in the start of your career as a social media activist? Put a light on those and tell us how you deal with them and how you managed to come out as such a strong, empowered, and powerful woman. Please put a light on this. Yeah, sure. I mean, exactly that happens. Okay, at first, let me know. Can you hear me? Yes, perfect. That's fine. Okay, You're muted. Ma'am, you are muted. oh yes. Do because I really want to like speak this question and in Urdu for especially for this question because this is very important thing. Especially for the girls and also not only for the girls but also for the young boys and for all age. Like why this is the simple thing. हमारे यहाँ सबसे मेजर इश्यू है ना वो रवैयों का है जो कि हमें अभी फेस करना पड़ता है इवन वाइल द कॉन्फ्रेंसेस देयर आर लॉट ऑफ ब्लंडर्स हैपन पर बहुत बहुत कुछ होता है कॉन्फ्रेंसेस में आके कोई शख्स आपको कह देता है विद इवन विद योर नेम कोई लाइक नहीं है इट्स फाइन आई मेड राइट इट्स फाइन समटाइम वी कैन बी रॉन्ग हम गलत हो सकते हैं समटाइम वी आर नॉट राइट बी ऑन द राइट ट्रैक but if you are right you need to be set in a right way like there is no like space to abuse someone there is no reason to harass people and that usually happen these things have happened so like this happened but there one thing is very important एक है नेटिजन जैसे सिटीजनशिप होती है ना सिटीजन होते हैं इस तरह नेटिजन होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको लर्न करना बहुत जरूरी होता है जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे कुछ रूल्स हैं आप बाय जाओ द ट्रैफिक के इन द सिमिलर वे देयर आर सम रूल्स फॉर द नेटिजन
एक उसकी भी पूरी एक लैंग्वेज है, डिजिटल लिटरेसी है, विच नीड टू बी फॉलोड, विच नीड टू बी स्टडी. हमारे यहाँ जो मेजर इशू ये है कि अभी हम इसको स्टडी नहीं करते. I also faced a lot of issue, but the problem is that मुझे इतने नहीं face करने पड़े. Honestly, uh, for me it's easy to deal. Reason कि मैंने study किया हुआ था. There are a lot of things कि how to handle the things, how to respond the people, उन्हें किस तरह से जवाब देना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये चीजें मैंने पहले थोड़ी सी पढ़ी हुई थी. मुझे उनकी हाउ नो थी. उसके बाद मैं नेट के ऊपर आई, उसके बाद मैंने अपनी पेरेंट्स और मैंने ये सारी चीजें सोशल मीडिया का यूज किया, जिसकी वजह से फॉर मी इट्स नॉट एज डिफिकल्ट. क्योंकि मुझे पता था अगर कोई आपको आपसे बदतमीजी करता है चैट में, आपको कोई लाइक इस तरह से हरास करता है, यू नो हाउ टू रिपोर्ट दैट पर्सन, यू नो हाउ टू गिव द शट अप कॉल. आपने किस तरह से शट अप कॉल देनी है. तो सबसे पहले मैं अब जब भी इसके ऊपर एक्चुअली हम लोग सेशन भी कंडक्ट करते हैं, मैं इसके ऊपर बहुत जोर देती हूँ. इट्स अ रिक्वेस्ट कि तमाम बच्चों को, इवन जब भी नेट से स्टार्ट करने से पहले इस रिक्वेस्ट, इवन मैंने मोमिना को पहले दिन क्लास दी थी एक, उसके साथ पूरे घंटे का सेशन उसकी प्रोफाइल के ऊपर है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चे इंटरनेट को इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि आप वो पढ़ती भी है. She study and she has YouTube, she has her own mobile phone, her own laptop, her own tab. आपके बच्चों के अपने एक्सेस में है, तो आप हर वक्त ही उनके पास 24 घंटे कैमरा नहीं रख सकते कि बच्चा क्या कर रहे हो. आपको उन्हें बताना होता है कि whenever you search, even sometimes आप स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे होते हो वेबसाइट के ऊपर, but there are lot of wrong stuff that happens. पर इसका ये अब आप हाय हाय करना शुरू कर दो कि हाय अब मैं क्या करूं. मुझे तो देर सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड दैट कि मुझे तो फोन ही बंद कर देना है. किसी ने मुझे रॉन्ग कॉल दे दी है, लाइक मेरी कुछ मिस कॉल आ गया, किसी गलत नंबर से आ गई, उसने कुछ गलत बात की है, अब तो मैंने 1 महीने के लिए फोन बंद करके रख देना है. दैट इज नॉट अ सोल्यूशन. दैट इज नॉट अ सोल्यूशन. स्टडी करना है तो उसको जवाब कैसे देना. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स अलॉट है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला रवैयों का मसला है, जो ऑलरेडी सेड के वी डोंट नो हाउ टू आस्क, वी डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. हमें नहीं पता. हाँ, आप सिंपल ही है ना कि अगर किसी और को बाहर आप किससे पूछते हो तो आप हर सारा दिन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम के चक्कर में नहीं पड़ते. दैट हैपन विद मी. अच्छा, लाइक आपको इंटरव्यू करना था, यू डायरेक्ट कम टू द पॉइंट. बट देयर सम ऑफ द आपके चैट कन्वर्सेशन होती है, सुबह होता है हाय, आप देखते हो, रात को आप कहते हो हाय, अगले दिन फिर होता है हाय. वो सारी जिंदगी हाय 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 चलती रहती है. तो बिकॉज देयर इज नो, दे डोंट नो कि बट डायरेक्ट कम टू द पॉइंट कि आप हाय लिखो, सलाम लिखो, नमस्ते, जो भी नीचे अपनी बात लिखो और बोलो कि ये मेरा काम जब भी देखो उसको कर देना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और स्पेशली लड़कियों के लिए तो समझते हैं किसने हाथ भी लगा दिया, फूल भी लगा दिया है, तो हमारे यहाँ तो लड़कियों को तो स्पेशली ही समझा जाता है, बिकॉज ब्रेन वॉचिंग ऐसी हुई है, शुरू से बताया नहीं गया हुआ कि इस तरह नहीं करना, किस तरह से बिहेव करना है. और स्पेशली होप्स हो कि विद द passage of time now things are going to be improved, बट लोग समझते हैं जो सोशल मीडिया पे लड़कियां आके इस्तेमाल करती हैं, दे आर नॉट लाइक, वो तो अच्छी होती नहीं है ना, वो तो सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए ही आई होती हैं, तो वो ही करना चाहिए. तो दिस इज आल्सो अ टेम्परामेंट. बट आई थिंक इसको ये सारी चीजें रवैये रहेंगे. अब हमें इन रवैयों के ऊपर बहस करने के बजाय वी नीड टू कि हमें इसको डील कैसे किया जाए. डील करने के लिए आई ऑलवेज सबसे पहले रेफरेंस है कि अवेयरनेस नहीं है. द फर्स्ट थिंग कि हमें पता नहीं है, हमें अपने राइट्स का पता नहीं होता. ऐसा बदतमीजी, आपको मोस्टली अपने राइट्स का पता नहीं होता, आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है. FIA डिजिटली बहुत कानून सख्त हो गए हैं. अगर आपको कोई हैरेस करता है, FIA आप डायरेक्ट रिपोर्ट करते हो, उस रिपोर्ट का आंसर आपको उसी वक्त कुछ ही देर में आ जाता है. आप जाने कि आपने सबसे पहले तो ऐसी चीजें आएंगी, लाइक मेरी मॉम इज यूजिंग यूट्यूब, तो शी सर्च समटाइम थिंग्स इन उर्दू, एंड ऑनेस्टली इन उर्दू दिस स्टफ इज द बी ग्रेड स्टफ. आई हैव टू से दैट. उर्दू में आप सर्च करते हो और चीजें निकालते हो, उर्दू वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हो, तो मैं बहुत सोच के साथ के आई हूँ, बट देयर इज लॉट ऑफ स्टफ, इट्स जस्ट अ बी ग्रेड थिंग्स. तो आपको हर टाइम उन्हें रिमूव द थिंग्स, रिमूव द थिंग्स. मैं मम्मा को बताती हूँ, मम्मा ये ऐसे करना होता है, इसको रिमूव करें, ये वीडियो नहीं, आप ये
जब इस तरह की कोई आ जाए, लाइक स्पैम न्यूज, फलां जगह से ये हो गया, फलां मर गया। पिछले दिन मम्मा कह रही थी कि देर सम टाइम लाइक जदाई आई थिंक ही इज डाइड। मैंने कहा मम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मा कहती है देखो यूट्यूब पे पूरी वीडियो आई है। सो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें तब होंगी जब हम लर्न करेंगे, हम डिजिटल अपनी जो प्रेजेंस है उसको समझेंगे। डिजिटल लिटरेसी का एक कोर्स होना चाहिए, आई थिंक ये कोर्स इसके अंदर स्पेशली ऐड होना चाहिए। और अगर नहीं भी तो आप जब स्टार्ट करने लगते हैं, आप अगर आप बड़े बहन भाई हो तो आपको अपने छोटे बहन भाई को सबसे पहले ये एक लेसन जरूर देना चाहिए कि ये रूल्स हैं, ये चीजें हैं। अगर हर चीज पोस्ट करने वाली भी नहीं होती है, थिंक हर पोस्ट चीज को पोस्ट करने से पहले सोचें, आप कमेंट करने से पहले सोचें, आप किसी रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचें। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है, इसलिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज इसलिए हैं कि हम स्टडी नहीं करते हैं कि ये मसला है तो क्यों है, इस मसले का सद्देबाप कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अगर इनका हमें सोल्यूशन चाहिए तो वी नीड टू स्टडी द थिंग्स, वी नीड टू नो आवर राइट्स, कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम कहाँ किस तरह के एक्शन ले सकते हैं, हम किस तरह शट अप कॉल दे सकते हैं। सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं होता है, बॉयज के साथ भी बहुत सारे अब्यूज के केस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड इफ यू नो आई थिंक्स आर गोइंग वेरी इजी, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें फेस नहीं करना पड़ता। बट इफ यू नो कि ये होना है तो आपको पता है कि आपको इसको ना कहाँ पे आपको इसको चाबी लगा के बंद करना है और कहाँ पे आपने इसका ट्रीट कैसे करना है, तो देन आपके लिए इट्स नॉर्मल। जी, आई एग्री विद यू 100%। आपने बिल्कुल सही कहा, और यू आर डेफिनेटली अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। और आई रियली लाइक दैट व्हाट यू सेड अबाउट द अपब्रिंगिंग, और व्हाट यू सेड अबाउट के यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सोशल मीडिया बिफोर यू केम। तो सही है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अभी से ही उस फील्ड में रिसर्च करे और वो काम करे। अगर कोई रिपोर्टर बनना चाहता है तो वो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो जब वक्त आएगा व्हेन यू रीच द ग्राउंड्स यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड एंड यू आर अ रेडी पैकेज। So with that being said, congratulations, you got nominated for Asian International Excellence Award. You are also, you've been an acclaimed writer, and you've been given certain other international awards. How do you feel? I mean, sometimes ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लेते हैं, जब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं और वी आर इन द लाइमलाइट, तो क्या होता है ना कि the most difficult thing is to stay grounded and down to earth. So how do you deal with that? Because I think this was a very important question to ask you, because this is what happens to me. The most difficult thing is finding out how to stay grounded and how to stay down to earth. So how do you deal with this fandom and limelight? एग्जैक्टली। अब इसमें शायद इट्स माइट बी बिग थिंग फॉर द पीपल, बट सम टाइम दैट हैपन फॉर मी एक्चुअली, honestly, to me, journey excites me. Like what happened in the process that excites me. But what's the result when I get something that doesn't excite me? I don't know. There's a problem with me. Like I want to reach that, and I struggle hard for that. But when I reach that, it's just like nothing. It happens. So then I start something new. I just realized that that's the process that helped me, like to motivate, that helped me to just carry on, and that excites me the more than the result. It's fine, like you get the happiness, but I'm actually like that. मैंने कभी लोगों को दिखाए जब मेरे फर्स्ट टाइम आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, इट्स जस्ट लाइक इट्स दैट आल्सो सीक्रेटली हैपन, मैं किसी को नहीं बताती थी। अच्छा, क्योंकि मुझे खुद, मैंने अपने लिए काम कर रही होती थी, तो सो इट वाज लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने खुद देखा, they खुद उन्होंने न्यूज़पेपर में रीड किए, एंड देन दे केम, अच्छा यू राइटिंग, दैट्स ग्रेट, एंड वाज दैट्स फाइन, like this. But the other thing is that people appreciate you. ये मेरे साथ बहुत मसला है कि मेरी आईज, इट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली, कि मेरी आईज चारों तरफ ना खुली रहती हैं, लाइक के जो किसी के दोस्त हैं वो भी मेरे दोस्त होंगे, किसी के जो एनिमी है वो भी मेरे दोस्त होंगे।
तो आपके पास वो चारों तक की जब इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, तो फिर उसके बाद आपको रियलिटीज, ये कुछ हार्श रियलिटीज आपको पता चल जाती है। फिर कोई आपकी तारीफ भी कर रहा होता है, कोई आपको कुछ कह भी रहा होता है, तो वो आपके सर पे सवार नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अभी किसी ने ये कहा है, थोड़ी देर पहले तो उसने ये कह दिया था। तो थिंग्स आर लाइक, अगर कोई ये कह सकता है तो ये भी कह सकता है। तो दिस जस्ट बेटा, कीप डाउन ना, calm down and ना ऊंचा नहीं उड़ना, just like, but sometimes that happen, sometime आप उड़ भी जाते हो, sometime you get, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको अच्छा खासा अल्लाह ताला सबक सिखा देती है। लाइक कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है, लाइक व्हेन यू गेट के ना, आई हैव अचीव्ड ऑल दैट, अब तो बस हो गया है। तो आप यू रियलाइज कि अब आपकी परफॉर्मेंस में वो स्पार्क नहीं रहेगा, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होगे। आप परफॉर्म करने के लिए आई फील कि ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ये हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं लर्न कर रहा हूँ। जब आप इस चीज के साथ करोगे ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, तो आप जब परफॉर्म करोगे तो उसमें हमेशा कुछ नई बात होगी, इट वुड बी ग्रेट। लेकिन जब आप ऑलरेडी ये अज्यूम कर लोगे कि आई ऑलरेडी हैव अचीव्ड, आई ऑलरेडी हैव डन, तो फिर परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा वही, जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम सिंस मैंने बहुत बहुत कभी कभी गलत काम भी कर लेती हूँ, लाइक शरारतें और वो सारी चीजें, तो उसके रिजल्ट में अल्लाह ताला मुझे ना बहुत जल्दी बता देते हैं, सबक सिखाते हैं, बिकॉज आई हैव वेरी फ्रेंडशिप, आई रियली, मैं इसके ऊपर मेक श्योर करती हूँ कि यू हैव टू बी अ गुड फ्रेंड विद अल्लाह, आप अल्लाह के साथ आपकी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। शेयर द थिंग्स, इट माइट भी आप अपने साथ ही शेयर कर रहे हो, तो लेकिन वो एक तवक्कल आ जाता है कि देयर इज समवन, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। मैजिकली थिंग्स आर जस्ट लाइक यू बिलीव माइन मायरेकल, तो वो चीज आपको जो है ना वो हेल्प करती है। द लास्ट थिंग, तीसरी चीज, व्हेन योर ड्रीम इज फार अवे, अभी तो डेस्टिनेशन फार 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 अवे है, आपको पता है वो बहुत दूर है, दीज आर नथिंग, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो there the journey is far, far, far. So for that you have to struggle so long. तो ये आपको जब पता हो कि आपने जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो फिर आप अपने पैरों पे ही रहते हो, ये बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज, जैसे मैंने पहले कहा, परफॉर्मेंस थोड़ी सी ना, उसमें परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लाइक एक ग्रेड के सेमेस्टर्स में ऐसा होता है कि एक ग्रेड में आपने पोजीशन ले ली, इट हैपेंस एक्चुअली, अगले ग्रेड में गए तो फिर समझ आई, अच्छा और थोड़ा ना ध्यान से थोड़ा फोकस करना है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपन। ये में से बहुत सारी चीजें हुई हैं, जस्ट लाइक इट्स नॉट सम पीपल सेड कि जर्नी इस तरह से नहीं होती है, वो जो एक हमारी फिजिक्स की होती है कि यहाँ जाकर पीक आ जाती है। एक्चुअली द थिंग इज लाइक, थिंग्स आर जस्ट लाइक दिस, it's very, the waves are very like ups and down, ups and down, sometimes peaks are high, sometimes get down, so life is just like that. That was very well said, ma'am. Thank you very much for sharing that. And what you said about lifelong learning and never stopping, I agree with that 100%. If we look at some of the most successful people that we have, take it Ellen DeGeneres, take it Oprah Winfrey, take it Bill Gates, Mark Zuckerberg, all of these people have one thing in common. Do you know what? It is they have all been born and born with a lifelong learning. That's what they believe, and we can take inspiration from them. And because you rightly said कि जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और जब हम ये रियलाइज करना शुरू होते हैं कि अब तो भाई मैंने अचीव कर लिया है, अब तो बस इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, फिर क्या होता है कि आप उसी अपने अंदर जो आपने सक्सेस क्रिएट किया होता है, आप उसी के नटशेल में रह जाते हो, एंड you don't develop and you don't evolve. So it's important that we have a lifelong learning, because learning never stops until we die. And I agree with whatever you said. Now, talking about your response when you came on social media, I'm sure कि चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होंगी in the beginning, until you got stable and everything worked out. I'm sure that there must have been a lot of criticism, and you must have faced a lot from your acquaintances and रिश्तेदारों का भी बहुत होता है. I understand, because social media किसी ने नहीं सोचा ना कि यहाँ पे कमाया भी जा सकता है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती हैं. तो put a light on that
Did you receive any criticism from your acquaintances, any pressure or anything like that? All right, criticism actually that happens. I have a very good friendship with the criticism since childhood. I love that. Like even this is my favorite quote. Like this is rejection. It's actually thanks to the critiques. They are actually the reasons to be here. I am here because they are. I'm very thankful for the one who support me, who appreciate me. But I love my critics because of them, I'm here. So it's I have always like some in my it happens from the childhood. किसने कहा बोलना नहीं आता, ओके नहीं आता तो लेट्स स्टार्ट स्पीक, चलो बोलना शुरू कर देते हैं. किसने कहा लिखना नहीं आता, एक्चुअली आई एम अ उर्दू राइटर एट फर्स्ट, तो मुझे उर्दू नहीं आती थी. At my fifth class, I really like this law. Like fifth class, my teacher always, she just wanted me, she just wanted to be punished because she always wanted the student to get 10 out of 10 in the test. And I always get 9 out of 10. I don't know what happened with this 1 mark. And this happened like for a week. And after the week, she just wanted me to send to the principal office. कि भाई आप इस बच्चे को मैंने अपनी क्लास में नहीं रखना. Actually, I don't know now these things are not happening, but at our time एक selective section होता था जिसमें कुछ नकम्मे रट्टे वाले बच्चे जिनको कुछ काम नहीं होता था उनको इकट्ठा करके डाल दिया जाता था कि ये रट्टा अच्छा लगा सकते हैं, तो वो सिलेक्टिव बच्चे हैं. तो वो पूरी स्कूल में आप लोग होते थे ना फेम में कि हम सिलेक्टिव हैं, तो इस टाइप का है. बट उसमें भी बड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती थी. देन आई स्टार्टेड राइटिंग उर्दू. मुझे भी याद है कि मैंने उसको लाइक एट दैट टाइम वी डोंट हैव द जनरेटर इन आवर, तो मोबाइल डाल के मुंह में मैंने दोनों हाथों से उर्दू लिखनी. 1 महीने मैंने ऐसा किया, फिर मेरे बाबा ने जनरेटर किया, वो सारी चीजें ठीक कराई. बट 1 महीने तक मैंने ऐसे ही काम किया, मुंह में मोबाइल डाला और दोनों हाथों से लिखना कि मैंने सुना मार्क्स. एंड दैट हैपेंड, दैट वर्क. लाइक आई गॉट दी वही क्लास जिसमें आई वाज नथिंग, आई गॉट द पोजीशन, I got recognized. And that was the first thing, I think first time I recognized that कि अगर आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो. अगर आप क्रिटिक कोई कुछ भी कहे, if you want to, you can. And this was the first time I realized that. So critiques always happen. Like मैंने लिखना शुरू किया, किसने कहा हंसता, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी एक टाइम रखा होता था ये आर्टिकल सेंड करने का टाइम है तो मुझे आर्टिकल ही इसमें सेंड करना है. ये मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बीआईसी जा रही हूँ ट्रेनिंग से, अभी मैं इस सोसाइटी में कुछ उधर जा रही हूँ. तो दे ऑलवेज मेड फन ऑफ कि कुछ आ तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है, पागल है, दीवानी है. बट ओके फाइन. एक चीज आई थिंक जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, आप अंदर ही अंदर पता होता है इफ यू आर सेटिस्फाइड दिस मीन things are pretty okay. Self satisfaction, I just realized that very necessary. सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है. तो अगर आपको खुद सेटिस्फाइड है तो फिर कोई दूसरा जो भी आपको कहे आपको बॉदर नहीं करना. अब समवन जस्ट मुझे किसी ने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी और किसने कहा कि 2 कान अल्लाह ताला ने इसलिए दिए, एक से सुनो एक से निकालना. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट लाइक दैट कि आपने एक से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है. हाँ, अगर आप सम टाइम डील नहीं कर पाते हो, जैसे माई ऑलवेज सेड टू माय जूनियर्स कि अगर आप सम टाइम डील नहीं कर पाते हो, लाइक हम ऑलवेज नेगेटिव थिंग नहीं ना सुन सकते हैं. देयर आर सम फ्रेंड के कुछ ऐसे होते हैं लोग कि वो हर वक्त ही आपने जब भी उनसे मिलना है हर वक्त उन्हें रोना ही रोना है, आइदर हर वक्त उन्हें कुछ ऐसी बात ही करनी है जो नेगेटिव जो आपको हर्ट ही करेगी. तो मेक अ डिस्टेंस, उनसे वो चीज डिस्कस ना करें. ये हम मिस्टेक की गलती, हम कोई भी काम शुरू करने लगते हैं ना अली, तो हम सबसे पहले उसका ढिंडोरा इसी उर्दू मुहावरा हम सबसे पहले उस पर शोर डालते हैं कि सबको बताते हैं कि अच्छा ये मेरा प्लान है. आई डोंट ट्रैप दैट. प्लान बनाया है, प्लान पे थोड़ा अमल करो, उसको कुछ करके दिखाओ फिर बताओ. अभी प्लान में कुछ किया ही नहीं है तो अभी ही लाउडली स्पीकर बन के हर जगह नहीं बोलो. ये मेरी एक टेक्निक है, आई ऑलवेज अप्लाई दैट एंड आई रेफर इट टू माय जूनियर्स. और स्पेशली उन लोगों को कट ऑफ थोड़ी देर के लिए कर दो जो आपको हर वक्त नेगेटिव कहते रहते हैं. अच्छा, जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने अपने कजन्स को, मैंने कुछ ऐसे लोगों को
I block them from my Instagram stories and from my WhatsApp stories कुछ अरसे के लिए कि अच्छा मुझे पता था कि मुझे अगर नेगेटिव चीजें आएंगी तो मैं उनको ट्रीट नहीं कर सकती. If you don't like if you can't treat them, it's better to make a distance. अपना काम करें चुप करके. Sometimes it's better to start the thing secretly. अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो वो और आप काम सही रास्ते पे जा रहे हो, जब आप कुछ बन जाते हो एवरीबॉडी लाइक्स यू. एक और चीज जो है अली, I have a lot of things, but I just wanna add this thing. Like there are a lot of like young people and lot of our students said that कि हमारे ना घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते. किसी को भी इनिशियल स्टेज में बहुत कम लोग होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिविलेज आपको होती है कि मुझे अगर थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी, बहुत रेयर होता है कि किसके पास कुछ भी ना हो, बट मोस्टली आपको थोड़ा बहुत, आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं. आप उन रिसोर्सेज को पकड़ें और अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपनी चीजें स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट में आपको तरीके नहीं मिलती, आपको तालियां नहीं मिलती. जब आप कुछ बन जाते हो ना, थोड़ा सा भी आपके पास आना शुरू हो जाए तो ऑनेस्टली आपको सब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स. इवन नाउ सम ऑफ माई फ्रेंड्स वांट टू बिकम अ राइटर. दे आर फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स जो कि मैं पहले चल के आ चुकी हूँ. नाउ दे वांट टू फॉलो दैट बिकॉज नाउ उन्हें पता चला है कि अच्छा कुछ रिजल्ट होता है, इसका कुछ फायदा है, ये बेकार की चीजें नहीं है. तो दिखाना पड़ता है, ये नेचुरली है. आपको शुरू में हर बंदा नहीं आएगा, हर बंदा गले नहीं लगाएगा. पहले आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा. जब चीजें थोड़ी बहुत नजर आना शुरू हो जाएंगी लोगों को, देन दे सडनली वुड सपोर्ट यू. और बाकी क्रिटिक्स थोड़ी बहुत तो सारी उम्र चलती रहेगी, और अगर वो ना हो तो आप ना रुक जाते हो. हर तरफ से तारीफें मिलने शुरू हो जाएं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते. यू जस्ट लाइक एक हो जाते हो, आप एक स्टैटिक फॉर्म में चले जाते हो. और स्टैटिक फॉर्म तो लाइफ में इकबाल का एक शेर है कि जिंदगी जो है वो हर वक्त चलने का नाम, एक सफर जिसमें आपने हर वक्त चीजें मूव ऑन होती रहती है. तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी और काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट टू मूव यू, कि आप चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो. Wow, that was absolutely wonderful. I agree with you 100%. And I thank you for sharing all of this. Thank you very much. I am so privileged. I'm beyond privileged, honestly. And thank you for giving me your precious time. I know you're a very busy person and you've got a lot of work, but it means a lot for me that you came. Now, we are going to go to our final segment. But before that, I want to tell the audience to please follow the page, share this video out, and follow Asma ma'am. The link to her Facebook profile is given in the captions. And now we're moving to our final segment, which is the rapid fire round. Now, I'm sure that even she also don't know that we are doing this, and it's a surprise because I think we've already shared a lot about her journey, about the work that she's doing. But before we move on to the rapid fire round, I have one last question to her. आप इतनी अच्छी राइटर हैं, आपने बुक लिखी एक आस, उसके बारे में थोड़ा बताएं. And definitely I'm gonna buy that book. I'm sure it's available on Amazon, so I'm buying that now. But I want you to tell us ke aapko, what was that force, what is that something that inspired you, that incented you to write this book, Ask, and what was the purpose behind this? That's a funny thing. Actually, I was starting writing. मैंने जैसे कि 2 साल हो गए थे मुझे आर्टिकल्स लिखते हुए, और वो सारी चीजें चलती रही. तो मैंने, as I like told you, कि I wrote a book for someone. So I always wanted कि मेरी भी कोई बुक हो, हम उसको भी पढ़े, कोई मैं पब्लिश ऑथर. The thing was only that. बस अभी उस तक यही चीज थी. तो मैंने just one second decision कि जैसे ही उनकी बुक पब्लिश हो रही है, उसी ऑथर से, उसी जो पब्लिशर से मैंने कांटेक्ट किया. आई वांट टू पब्लिश माय बुक. मेरे पास कंटेंट तो आगे लिखा हुआ था, तो वो मैंने अपने तमाम चीजें, आई सेड कि आज इज जस्ट अ जर्नी, इट्स जस्ट थॉट्स ऑफ अ ट्रैवलर. एक लर्नर की थॉट्स हैं जो उसको फील हुआ जैसे वो जर्नी से गुजरा. बिकॉज समटाइम पीपल थिंक जो लोग कुछ अचीव कर रहे होते हैं वो हमेशा उनकी लाइफ में चीजें बड़ी स्मूथ होती हैं.
बड़ी वो हमेशा अच्छे तरीके से जो है ना वो रह रही होती है. तो आई जस्ट वाना डिक्लेयर कि ऐसा कुछ नहीं होता. एवरी डे यू हैव टू डील अ चैलेंज. आज मैं फीवर से जो है ना वो डील कर रही हूँ, बट आई एम वर्किंग फ्रॉम सिंस मॉर्निंग. इट्स एवरी डे दैट हैपेंस, लॉट ऑफ थिंग्स. बट ये है कि सम पीपल कोशिश करते हैं कि अच्छा उसको सर पे सवार करने के बजाय हम अपनी ध्यान कहीं और ले जाएं, हम उससे निकल जाएं. तो वो एक वही जर्नी है, आज की वही एक जर्नी है, एक होप है. आज तो हर दिन कुछ ना कुछ होता है उसके साथ, हर दिन उसे एक नई से नई चीज के साथ डील करना पड़ता है. बट एट द एंड एक होप है कि अगर आज चीजें कुछ बेहतर हुई हैं तो कल ज्यादा बेहतर होगी, परसों ज्यादा बेहतर होगी. तो उसी के साथ वो एक बुक देखी जिसका ये एक्शन है, उसमें यही चीजें हैं. और वो इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी, थॉट्स ऑफ अ ट्रैवलर. Wow, that sounds really interesting. Wow, absolutely wonderful. And yes, you elaborated very well. Now, before we move on to our rapid fire round, I want to mention that you can get a copy of her book. I think it's on Amazon, right? Yes, it is not Amazon. It's right here. I don't know. Yeah, yeah. There's another two books that are on Amazon. Oh, Because at that that's time, at that time I didn't know there's something Amazon. oh, okay. So It's see, that time. It's the old time thing. At that time, I just wanted to publish. At that time, I didn't know about any other thing. ladies and gentlemen, dear audience, we have us in front of us the incredible, the incomparable, I would say, Asma Tariq, who has evolved over the years, who have transformed herself into a completely different person that she was few years ago. And yes, she is definitely an inspiration to so many Pakistani boys and girls. And I'm sure कि हम सही कहते हैं कि ड्रामे असल हकीकत पे भी बनते हैं, क्योंकि आपकी कहानी सुनकर मुझे एक ड्रामे की याद आ गई. आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, डाइजेस्ट राइटर. वो बहुत एक अच्छा ड्रामा था, और उसमें भी एक राइटर होती हैं जो कि टीवी के लिए लिखती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, और जो फैमिली का प्रेशर और मुआशरा क्रिटिसिज्म, तो दैट वाज, आई थिंक, आपकी बहुत रिजेंबल करती है कहानी with that serial. And Sabah Kamar played that, and I mean, you really resemble with her. So moving on to our final segment, which is the rapid fire round. अब ये जो questions हैं ये थोड़े से interesting होंगे, कुछ legitimate होंगे, कुछ illogical भी होंगे, so कुछ rare भी होंगे, तो to add a little bit of fun. Okay, here we begin. Define yourself in 3 words. Learner, learner. Yeah, it's just a learner, struggler, and stubborn. Wow, that's amazing. What is your dream job? Is it that what you're doing now, or it was something else? Like it changes. Like I am not a person who fixes one thing. I I love to do the multiple things. That's my personality. Like I would say evolving every time. If there's something that evolves me, if there's something that excites me, this is my dream work, this is my dream job. That's certainly right. If you could change anything about Pakistan, any one thing about Pakistan, what would that be? I just wanna like raise the awareness. I think there's only one problem and the problem of awareness. लोगों को नहीं पता, शौर नहीं है. Education is something different. We always mix education and awareness. Education is totally different and awareness is totally different. So I really want to like बस गली गली मोहल्ले मोहल्ले शोर मचाना है, अवेयरनेस पहुंचानी. That's correct. I agree with you. Now, this one is a very funny one. What is the color of your toothbrush? It's red. I just bought it. Yes, Are you yes, sure yes, it's red. red? Because it's such a big coincidence. I'm also using red these days. And I often change my toothbrush, like for I use it for 1 week and then I have to change it. But that was a very rare one. I don't want to make you embarrassed, but I think it was okay to add a bit humor. Who is the most inspirational person in your life? Who do you look up to every day as a source of inspiration? It's my own self, but my mother.
I really, my mother. I mean, I have a lot of people who inspire me. अगर टाइम हो तो एक लास्ट पिक भी मैं शेयर करूंगी लास्ट पेपर भी बट सब कुछ खत्म हो गया माय मदर हर स्माइल Oh, wow, that's so cute. That's so admirable. That was adorable. What is your favorite thing to eat? I'm not foodie but favorite thing okay I like Italian foods pasta Oh, okay. You are right. You're not foodie because your figure can tell us. You are a very smart one because we won't accept, because the society won't accept a fatty, obese woman. I Does that make any sense? Am I being illegitimate right now? But yeah, that was. Are you a morning person or a night person? what you say Are you a morning morning person, morning or night? it makes I don't know. Sometimes I like, but I'm okay to work after like 1 a.m. to 9 a.m. That is the wonderful time to do a work. Even if this is a product, it's a really something. If you want to be productive, this is a good period. Wow. Now, two last questions remaining. I hope I'm not taking a lot of time, but I think it's fun. If you could go anywhere around the world, anywhere at any place, what is that place you would like to go right now? Right now, I just want to go to Canada. Inshallah, I'll pray for you that you go there and achieve your dreams, because I'm sure you will get opportunity. Don't worry, you are already all rounder. Now, this is the last one. I know कि हम अपना future predict नहीं कर सकते. We cannot speculate anything right now. But I wanna ask कि आप इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, आप इतना कुछ कर रही हैं. The question is कि where do you see yourself in 5 years? आप खुद को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? क्या होता देखती हैं? That things actually 5 सालों कुछ पता नहीं होता because in these 3 and 4 years actually, especially in COVID period, it just told you that you are nothing in front of nature. It's actually the nature who decides. But I think I keep myself a learner who just want to move on and move on. I want to be a learner even throughout my life. This is the best thing. जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. आई एग्री विद यू, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी जैसी अप्रोच रखूँ लाइफ टाइम लर्निंग की, एंड आई एम श्योर कि बहुत एवोल्यूशन आएंगी, और वी विल चेंज नॉट जस्ट एज अ पर्सन, बट ऑल्सो वी विल हैव माइंड सेट्स चेंज. तो बॉटम लाइन इज कि हम अपने माइंड सेट्स चेंज करना चाहते हैं. जो हम कन्वेंशनली जो चीज़ें करते हैं, वी वांट टू इरेडिकेट दैट, वी वांट टू एलिमिनेट दैट, and we want to come up as a more empowered, more powerful, and more revolutionized nation. With that being said, this was the final question. Thank you very much, ma'am. I thank you from the bottom of my heart for coming and for sharing with us your wisdom. Now, before we go off air and I end this broadcast, I want to give you the stage, the mic, and for the concluding message. Anything last, simple, brief, and precise that you want to share? Go on. Right. Thank you so much. At first, thank you. I really enjoyed that. I was actually since morning. I'm going through a lot of things. I have a fever, so temperature, and but I feel very relaxed here. Even before that, I was feeling. I don't know. I could handle that, but now I'm feeling very like relaxed. Thank you so much for that. Okay, yeah. I just want to share like never ever compare your journey and yourself with someone else. Sometimes we think that कि every like some possibly I have one track मुझे किसी चीज से कामयाबी मिल जाए might be that thing doesn't work for you so recognize your own path but with that never ever compare yourself with someone else and don't copy like follow the people but never copy them because it's just destroy your own personality and one like I always said but फॉलो नहीं करना कंपेयर भी नहीं करना लेकिन वो ना रखने हैं उसे क्रश कह लें आप उससे थोड़े थोड़े अरसे के लिए just meant I was in metric so I have some students in my like senior and they उनके बड़े अच्छे marks थे they have good positions in gold so I said I need to beat them
आई नीड टू फॉलो दैट. सो उनके साथ एक कंपटीशन, उन्हें नहीं पता मैंने कंपटीशन लगाया हुआ है. बट आई रियलाइज आफ्टर दी 1 year कि दैट वर्क्स. इसी तरह आफ्टर सम years अपने थोड़े से आइडियाज को चेंज करते रहा करें, लेकिन लाइफ में ऐसा जरूर रखें दैट कैन बी नो लाइक दैट, no gender bias, that can be a male, that can be a woman, but जो आपको एक्साइट करे, जो आपको एक मोटिवेट रखे कि इफ दैट पर्सन कैन अचीव, यू कैन आल्सो अचीव. तो आप उसको देख के मोटिवेट होते रहे. ऐसे जरूर थोड़े से रखा करें आइडियाज, और सारे उन्हें चेंज भी करते रहते. It's my that I don't know that would work in your case, but when it's a change that works in my case. Like I after some time यूनिवर्सिटी के कोई बला बंदे थे, some said के थे यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, उनके चिल ग्रुप हैं, तो अच्छा उनके साथ कंपटीशन. अब इनके इधर मीट अप करना है ना. इसी तरह चीजें बदलती गई, तो जो वहां पे सबसे होते हैं इधर वाले, तो आई ऑलवेज के अब इधर मीट करना है. तो आप जब कहते हो ना कि आप बेशक यहाँ पे भी हो, तो आप स्ट्रगल करते हो, और आप वहां तक ना भी पहुंचो तो आप यहाँ तक जरूर पहुंच जाते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है. Gee, I agree with you, ma'am. I 100% do. And what you said, I want to remind the audience what you said about peace of mind and self-satisfaction. सोसाइटी की नज़रों में आपका काम बिल्कुल इंफीरियर होगा, वो आपको कमतर समझेंगे, और वो लोग कहेंगे कि जो ये करते हैं इसमें पैसे नहीं हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो ये कम्प्लीटली फेल है, इनके ये अनसक्सेसफुल है. लेकिन एज फार एज आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि पीस का दूसरा नाम है पीस ऑफ माइंड एंड सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस का दूसरा नाम है पीस ऑफ माइंड. तो अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपको जो आप कर रहे हैं उससे खुशी मिलती है, then congratulations my friend. Don't listen to the criticism, don't listen to anybody. हाँ, criticism अच्छा है डेवलपमेंट के लिए, बट अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, वो आपको दिली खुशी दे रहा है, तो there's nothing better than that. और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और यू आर नॉट कंफर्टेबल, और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, then do something to change it. और अगर लोग कहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो you've got nothing. So with that being said, ladies and gentlemen, we were in conversation with the incomparable, the versatile, the impulsive, I don't have words to describe Asma ma'am and her work, her body of work, but overall, she's an amazing human being, I must say. So, with that being said, thank you very much, ladies and gentlemen, for watching this podcast. I hope you enjoyed it, and I will see you in the next one. Bye.